Hello and welcome to another edition of the Spotlight. So today I'm going to continue with the blunders series, and today we are going to look at the common blunders that people make when it comes to the VARC section. So हमने quant के blunders देख लिए, DILR के blunders देख लिए. So if you haven't had a look at those videos, you can have a look at the previous spotlights and you will be able to understand what are the mistakes that people generally make when it comes to the QA section and the DILR section. Today we are going to look at the VRC section. So VRC section काफी challenging हो जाता है for a lot of people, and a lot of people don't really know why they are making certain mistakes or why are things not really going in their favor. So बहुत बार लोगों को ये लगता है कि अरे नहीं मतलब पेपर डिफिकल्ट है या फिर मुझे ही कुछ आता नहीं होगा, मे बी समथिंग दैट आई डिडंट डू वेल एज अ चाइल्ड दैट इज कमिंग बैक टू बाइट मी. तो ये सब चीजें इज व्हाट पीपल एक्सपीरियंस, पीपल थिंक. So today we will try to see if that is indeed true, if you are going to be able to do well at the VRC section in spite of not having a reading habit and so on and so forth. तो वो चीजें देख लेते हैं एक बार, and of course then I will take some questions if you have any, and that is basically what we will be doing. So right off the bat, सबसे पहली चीज that people do which is a blunder according to me is they do not practice their reading comprehension passages or they do not practice their answers well. तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है जहाँ पे you keep on taking mocks, and I hear a lot of people telling me that they have taken n number of mocks, they have scored x y z in each of those mocks. क्वांट एंड डीएलआर में डिसेंट परफॉर्मेंस चल रहा है बट वर्बल में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा, एंड देन दे डोंट रियली नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इज दिस हैपनिंग. ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब मुझे ये वाले पैसेज में या ये सेट के अंदर, ये सेक्शन के अंदर मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम राइट नाउ. व्हाई इज दैट अ प्रॉब्लम? बिकॉज दैट्स अ प्रॉब्लम विद नो सॉल्यूशन पर से, बिकॉज यू डिड नॉट मार्क द करेक्ट आंसर, दैट्स व्हाई यू डिडंट गेट मार्क्स. एज सिंपल एज दैट. अब उसका और तो कुछ आंसर नहीं हो सकता. The idea is that you keep on doing the things that you have been doing for the last 6 months, 1 year, जितने भी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी मतलब माइंडसेट जो था वो चेंज नहीं हो रहा. एंड इफ योर माइंडसेट डजंट चेंज देन इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प योर कॉज एट ऑल. ऐसा बहुत मुश्किल होगा टू काइंड ऑफ सी अ ट्रांसफॉर्मेशन. एकदम ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशन देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इफ यू हैवंट रियली चेंज योर हैबिट्स बाय मच. तो ठीक है, मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए, एंड ऑफ द स्टोरी. नाउ बिफोर द नेक्स्ट मॉक व्हाट आई डू इज आई सिट एंड रीड वन ऑन आर्टिकल एवरी डे, या फिर मैं हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ता हूं, या फिर मैं और कुछ चीजें करता हूं. मैंने नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस करेक्टली. अब रीडिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ द पजल. Comprehending, answering questions, evaluating options, having a thought process that helps you filter options, that is a different part of the story entirely. तो पहला वाला पार्ट ठीक से कर लोगे, रीडिंग अच्छी हो जाएगी, आई एग्री, यू विल बी एबल टू रीड द पैसेजेस फास्टर, फाइन. बट अगर क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम. तो क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व कैसे करने वो समझना है. वो कैसे समझ सकते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वेयर योर थॉट प्रोसेस इज गोइंग रॉन्ग. सो बहुत बार ये होता है ना दैट आई विल बिलीव इन समथिंग एंड इवन इफ समवन टेल्स मी समथिंग आई विल बी लाइक नहीं मैं बिलीव ही नहीं करता, वो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू में मेरा ही जो बोल रहा वही सही है करके. Now, if I do that, ठीक है, I am feeling good about it because I have full confidence in my ability, agree. But will I be able to improve with that attitude? I don't think so. तो अगर मुझे improve होना है, so I will have to listen to others' point of view as well. फिगर आउट कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू पेपर सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे मैच कर रहा है, और उसमें से कुछ चीजें हैं क्या जो मैं नोटिस कर सकता हूं. बिकॉज एवरीवेयर इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉपर थॉट प्रोसेस दैट इज गोइंग टू बी एट प्ले. ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली उसने उसको ऐसे दिमाग में कुछ 4 वर्ड दिखे वो सोचा और फिर आंसर मार्क कर दिया, ऐसे नहीं होगा. ये चीज मैंने पढ़ी, यहाँ पे मैंने फोकस किया, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू ग्लीन दिस इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ विच आई वॉज एबल टू आंसर करेक्टली. तो वो अगर क्लियर थॉट प्रोसेस है, लाइफ बिकम्स मच इजियर फॉर यू. सो इफ यू आर नॉट डूइंग वेल एट आरसीज एंड अगर मॉक्स में स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, I would strongly suggest that you talk to people who are doing well at RCs. उनको एक आध क्वेश्चन दिखा दो, बोलो कि भाई ये क्वेश्चन है, how would you attempt this particular question? Ask them to think a bit aloud and try to do it. The parallel to this is live mock solving sessions. तो live SimCAT solving या live AIMCAT solving या live CL mock solving sessions जब होते हैं, तो वहां पे आई विल जनरली टॉक अलाउड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय माइंड. तो वहां पे यू विल बी एबल टू सी कि अच्छा ऐसे दिमाग चलता है, ऐसे बेसिकली हम चीजों को देखते हैं, ऐसे हमको देखना चाहिए. सो दैट इज बेसिकली द इनसाइट दैट यू आर गोइंग टू गेट. तो वो इनसाइट्स मिलेंगे तो यू विल बी एबल टू डू वेल. वी ऑल्सो हैव एन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल विच इज ओपन फॉर ऑल कैट 25 एस्पिरेंट्स. सो यू कैन ज्वाइन दैट चैनल. वहां पे काफी सारे सीरियस प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं. सो यू कैन, इफ यू हैव अ डाउट इन टर्म्स ऑफ द वीआर सेक्शन, आई वुड स्ट्रांगली एनकरेज यू टू आस्क दोस डाउट्स देयर, बिकॉज मैंने बहुत जगहों पे देखा है
लोग वीआरसी के डाउट्स नहीं पूछते. इनफैक्ट सीजन इतना आगे आ चुका है, आई कैन बेयरली रिमेंबर 4 or 5 VRC डाउट्स दैट वुड हैव बीन आस्क्ड टू मी, एंड वी हैव 1000+ मेंबर्स ऑन दैट चैनल. तो मतलब डेफिनेटली देयर आरंट अ लॉट ऑफ पीपल हु आर रियली किक्ड अबाउट the VARC section, right? तो वो attitude अगर change करोगे, automatically I think you will start seeing improvement in your performance. The second thing is people reread RCs. तो you are not mindful enough, you are not focused enough. पढ़ना शुरू कर दिया और फिर पढ़ पढ़ के एक पैराग्राफ खत्म कर दिया, नहीं सडनली नहीं नहीं अरे मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, क्या हो रहा है यहाँ पे, अरे ये लाइन कहाँ से, रुको रुको, अगेन लेट्स गो फ्रॉम द बिगिनिंग. ये जो रीसेट करते रहोगे ना, इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन. वन, तो एक तो चीज ये हो रहा है कि यू आर टेलिंग योर सेल्फ दैट दिस पैसेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं इसको 2-3 बार मुझे पढ़ना पड़ रहा है फॉर मी टू मेक सेंस ऑफ दिस. सो दैट गिव्स यू अ सबकॉन्शियस क्यू दैट दिस पैसेज इज डिफिकल्ट. अब एक बार वो एस्टेब्लिश हो गया कि ये पैसेज डिफिकल्ट है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट एंड सॉल्व दैट पर्टिकुलर पैसेज. तो ये एक चीज है जो नहीं करोगे तो तुम्हारे ब्रेन को अपने आप कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा. इफ यू रीड द एंटायर थिंग इन वन गो एंड यू स्टार्ट सॉल्विंग इट, योर ब्रेन विल गेट that amount of confidence that will help your cause. So make sure कि आराम से पढ़ रहे हो, ठीक से पढ़ रहे हो, you are mindful, you are making notes, mental notes, you are trying to predict what is going on in the passage. ये सब चीजें अगर कर रहे हो तो you will not have to reread RCs, and rereading RCs I think is going to be a big disaster अगर वो हो रहा है तो. The third thing is not giving enough time to the VA questions. So VA को ना हमेशा से वो स्टेप चाइल्ड वाला ट्रीटमेंट मिलता है. आरसीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक आरसी सॉल्व करने के पीछे लोग 8, 10, 12 मिनट भी लगाते हैं कभी कभी, विच इज डेफिनेटली नॉट हेल्दी. But doing that, you will kind of scold yourself when it comes to solving the VA section and VA part of the section, and वहां पे 1 मिनट के अंदर आंसर निकालना है, ये माइंडसेट के साथ जाओगे. And you will start feeling antsy maybe 30-45 seconds into the question कि अरे मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, so on and so forth. या फिर VA के लिए टाइम ही नहीं बचेगा. At the end of the day, you would have solved 3 RCs in 32, 33, 34 minutes, and then you would be left with 6 minutes to solve 8 questions. अब that's a very bad equation to have in front of you, and वहां पे definitely VA के अंदर you will miss out on few sitters that are there. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है that 2 RCs difficult आ जाए but VA easy हो जाता है. So you have to be on your toes and give enough time to VA questions as well. Every VA question deserves 2 minutes, 2.5 minutes of your time. So अगर 6 क्वेश्चन कर रहे हो, I would suggest that you keep 15 minutes aside for the VA part. अगर जल्दी होता है तो you can use it to do something else, but you have to budget for 2.5 minutes per VA question. तो ही मतलब you will be able to handle it well. The next blunder that a lot of people make is they को एकदम ऑल आउट. मतलब सी क्वांट के अंदर अगर मेरे को आंसर आ रहा है 7920 एंड मेरे ऑप्शंस अगर है 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, मेरे को पता है मैंने कुछ तो गलती किया हुआ है. आई एम नॉट गोइंग टू गो एंड मार्क 15,000 बिकॉज दैट इज द क्लोजेस्ट आंसर. वो मैं नहीं करूंगा. बट VARC के अंदर लॉट ऑफ पीपल डू दैट. क्लोज इनफ, चलो मार्क कर देते हैं. 2 में से एक सिलेक्ट करना है, 50% प्रोबेबिलिटी, मार्क कर देते हैं. नाउ दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प योर कॉज, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल डोंट प्रैक्टिस वेल एंड दे डोंट डिस्कस देयर आंसर्स, बिकॉज देयर इज नथिंग टू डिस्कस. A lot of it is based on instinct कि मेरे को लगा करके मैंने मार्क कर दिया. अरे लगा मतलब क्यों लगा? What are the 3 reasons why you think option B was right and option C was not right? So people find it very difficult to articulate it, express themselves. तो वो सब डिफिकल्टी आ जाती है. So वो जिस दिन आना शुरू हो जाएगा ना, you will be able to do well in the VARC section. So make sure that you are expressing yourself well. उससे you also become accountable to yourself. तो मतलब तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में भी वो काम आएगा and it will benefit your cause as well. So just don't try to boost attempts by marking something. वो नहीं करना है. You have to mark whatever you're absolutely certain of, and अगर ambiguity है तो उसको mark मत करो. You can make a note of it somewhere and keep it just to verify if your thought process was right or not. But make sure that you are not boosting your attempts. So randomly सिर्फ attempt करना है, close enough है कर देते हैं, तो वो जोश में आके attempt मत करना. Because I know that some people think that अरे जिस दिन चल गया उस दिन तो सब मिल जाएगा. But ऐसी कितनी बार हुआ है लाइफ में that everything has gone in your favor, right? बहुत rarely ऐसा होता है that all your guesses will turn up in your favor. It is a very rare occurrence. उसके लिए you can't spoil your entire section. So don't do that. Make sure you're attempting selectively. You're attempting 2 RCs, 4 VA questions, fine. 3 RCs, 4, 5 VA questions, fine, कोई प्रॉब्लम नहीं है. There is no need to attempt 24 questions कि भाई पैसा दिया तो सब अटेम्प्ट करके आना ही चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So don't do that. Don't fall into that trap. It's a far more common trap than what you think it is. And जो difficult पैसेज होता है ना, उसमें अगर एक करेक्ट 3 रॉन्ग भी हो ना, तो भी your net zero. That time could have been invested somewhere else. So don't get into that situation जहाँ पे you are investing time half-heartedly and just trying to attempt everything in front of you. तो वो मत करना. That is, it's fine to not attempt one passage. ठीक है? And the last thing is thinking everything is ambiguous.
तो जो लोगों को डर होता है ना वीआरसी में, तो वो लोग कभी भी ब्लेम खुद पे नहीं लेते. दे विल नॉट जनरली से कि मेरी गलती थी, मैंने पैसेज के अंदर ये वाले पैराग्राफ के अंदर ये चीज नहीं पढ़ी थी. दे विल नॉट से दैट. दे लाइक क्वेश्चन एम्बिगुअस है, ऑप्शन एम्बिगुअस है. सी नॉट अ लॉट, इवन आई से इवन आई एम गिल्टी ऑफ कंप्लेनिंग कि यार ये मेरे को क्वेश्चन मजा नहीं आ रहा, आई डोंट थिंक द ऑप्शंस आर फाइन. बट देन आई विल आल्सो हैव माय रीजंस, आई विल जस्टिफाई इट एज वेल, सेइंग दैट ओके इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, बट ये ऑप्शन जो है वो सिर्फ दो ही चीजों को कवर कर रहा है, जबकि ये ऑप्शन तीन चीजों को कवर कर रहा है. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज माय आंसर. ऑल्दो इट्स रॉन्ग, इट्स ओके, आई हैव अ वेरी स्ट्रांग रीजनिंग बिहाइंड मार्किंग सी एज द आंसर. तो वो अगर होगा तो योर लाइफ इज फाइन, इट बिकम्स इजियर फॉर यू. यू विल नो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज यू हैव अ गुड रीजन योर आंसर्स माइट बी राइट. बट अगर रीजनिंग ठीक नहीं होगा, इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. तो पूरा का पूरा सेक्शन कभी भी एम्बिगुअस नहीं होता, पूरा का पूरा सेक्शन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होगा. वन पैसेज माइट बी डिफिकल्ट कैट के अंदर, मॉक्स के अंदर जो भी हो, बट कैट के अंदर फ्रॉम व्हाट आई नो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, I don't think there is going to be more than one difficult passage when it comes to the CAT. I don't think there are going to be more than two or three difficult questions when it comes to the VA side of things. So don't worry about the entire section being rigged. ऐसे नहीं होगा. 24 questions में से 16-17 questions will have proper unique answers. The options will be far apart. Try to answer those 16-17 questions properly. Get whatever 40 or more marks that you can get and get done with the section. पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने जाओगे, गलत अटेम्प्ट करते बैठोगे, एक्यूरेसी नीचे जाएगा. इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल. सो मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग सिलेक्टिवली, वन. एंड द सेकंड थिंग इज यू आर पेइंग अटेंशन टू व्हाटएवर यू आर अटेम्प्टिंग, राइट. सो ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा मैंने कुछ भी मार्क करके आ गया, ऐसा नहीं है. सोच सोच के ही कर रहे हैं, आराम आराम से कर रहे हैं. पूरा सेक्शन कभी भी एम्बिगुअस नहीं आएगा. इवन दी टफेस्ट ऑफ योर सिमकैट्स, जो एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि इसका ये बहुत डिफिकल्ट होता है करके. So even in the toughest of those tests, I'm sure you are going to be able to find 12, 13, 14 questions which will have unambiguous answers. एक ही करेक्ट आंसर होगा जो होने वाला है. आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग इन दी नेक्स्ट लाइव सॉल्विंग सेशन जहां पे आई विल फोकस ऑन गेटिंग 100% एक्यूरेसी. मैं वहां पे रिस्क नहीं लूंगा, रिस्क वाला एलिमेंट पूरा का पूरा मैं हटा दूंगा. एंड देन आई एम गोइंग टू टेक अ टेस्ट. So that is going to be the theme of the next SimCat live solving session that we are going to do. I will share the details soon, but that is what I have in mind. So that all those of you who are struggling with accuracy, you get to see कि कम अटेम्प्ट में भी कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं टेस्ट को. आई एम नॉट सेइंग आई एम गोइंग टू गेट ब्रिलियंट मार्क्स, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे हैंडल करना है, हाउ टू टेल योरसेल्फ कि इट्स ओके टू नॉट अटेम्प्ट अ क्वेश्चन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट लाइव सॉल्विंग सेशन. ठीक है. Anu is asking, should I focus on placements or CAT? My CAT preparation is medium, not great, and I am a gem. Should I focus on placements and try to get 95 percentile this year and prepare next year during internship and work? So Anu, see, मतलब your CAT preparation is medium, मतलब you're already getting 90, 92, 95 percentile, तो ठीक है. बट द आइडिया इज प्लेसमेंट्स के अंदर यू शुड फोकस ऑन प्लेसमेंट्स बिकॉज दैट गिव्स यू अ कुशन. तो कैट का अगर सर्टेनिटी नहीं है, आई वुड सजेस्ट दैट यू गो ऑल आउट फॉर प्लेसमेंट्स. सी प्लेसमेंट का प्रिपरेशन आई डोंट थिंक इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम योरसेल्फ. मतलब ऐसा नहीं कि 90 डेज लगेंगे प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए. इट्स मोस्टली गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ 1 वीक एंड यू बीइंग देयर एट द राइट प्लेस, राइट टाइम. यू शुड जस्ट गो एंड टॉक अबाउट व्हाट यू नो. दैट्स द ओनली थिंग. मतलब इट्स वेरी रैंडम. एंड टिपिकली इफ यू आर इन, बिकॉज यू आर एन इंजीनियर, वहां पे प्लेसमेंट्स बहुत ही मतलब सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं. सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ सुपर ह्यूमन एफर्ट फ्रॉम योर साइड कि कैट का प्रिपरेशन पूरा छोड़ के सिर्फ प्लेसमेंट पे ध्यान दो. आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इशू पर से. सो मेक श्योर दैट यू आर वन फोकसिंग ऑन योर प्लेसमेंट्स, गेटिंग देम आउट ऑफ योर सिस्टम एज सुन एज यू कैन. एंड कैट के लिए भी प्रिपेयर करो. इफ यू आर गेटिंग अ गुड डील एट द कैट, देन व्हाई नॉट. मतलब यू कैन टेक इट अप दिस ईयर इटसेल्फ. एंड इफ नॉट, लाइक व्हाट यू हैव सेड, इट विल गिव यू गुड एक्सपीरियंस and you will be able to face the CAT in a better manner next season. So अभी के लिए तो मतलब focus on your placements as and when they happen. Maybe 1 week, 10 days, 15 days is what you will need to prepare for your placements max. And beyond that, everything else, 70-75 days that you would have left over, all those can go into your CAT preparation. ठीक है. Mohit, what to do? Today I have attempted 5 RCs. First RC 2 out of 4, second 4 out of 4, third 3 out of 4, fourth 1 out of 4, fifth 2 out of 4. Mohit, it depends on मतलब why did you attempt 4 questions from all 5 RCs? That is one question that I have. Practice में अगर करें तो ठीक है, but उसके अंदर भी मतलब what went right in the 4 out of 4 thing and what went wrong in the 1 out of 4 thing, that is what you will be able to answer. क्यों हो रहा है? That is the question that we are all struggling to get the answer to, right? But passage in itself difficult था, पढ़ने नहीं हुआ, समझ में नहीं आया. That could be a problem. That could have been an issue. वो हो सकता है. या फिर मैंने पढ़ा but थोड़ा zone out हो गया after maybe 2 or 3 passages. So first 3
पैसेजेस तक यू आर डूइंग फाइन, फोर्थ और फिफ्थ में मे बी फटीग आ गया, 5 पैसेज बैक टू बैक में नहीं कर सकता, मे बी दैट कुड बी एन इशू. सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट द इशू इज एंड वर्क ऑन इट, राइट. अगर 5 पैसेजेस बैक टू बैक नहीं कर सकते, मे बी यू कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस सम वीए क्वेश्चंस इनटू प्रिपरेशन, बिकॉज कैट में 5 पैसेज बैक टू बैक नहीं करने पड़ेंगे. सो व्हाई नॉट डू इट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग एज वेल. इंट्रोड्यूस 5 वीए क्वेश्चंस, 3 पैसेज हो जाएंगे, 2 वीए क्वेश्चन कर लो, देन गो टू द नेक्स्ट कपल ऑफ पैसेजेस, समथिंग लाइक दैट यू कैन डू, just to stay fresh, because reading a passage and answering a set of questions will take time. It's a good 6 7 8 minutes का investment जहाँ पे you are focusing on only one thing in your life, and all of us know how good we are at focusing on one thing in our lives. So वो वाला जो भी problem statement है उसको वैसे अटैक करना है. If the passage was difficult to read, maybe you could have let go of the fourth passage entirely and practice के लिए 4 पैसेज कर लेते हैं, and the fifth passage you could have just done leisurely. उसके स्कोर को काउंट भी नहीं करना चाहिए. Then it's fine, right? So whatever is the issue, you have to address that particular bit, and I think you should be good. ठीक है. Ace OP on the other hand is saying that my VRC preparation is progressing well overall, but I face two key challenges. I take about 11 to 12 minutes per RC. When I try to reduce my time, my accuracy drops significantly in VA. My accuracy is very low in jumbles and odd one out. So वही है, तो jumbles में अगर accuracy low है, don't prioritize it or don't think about it as it contributing to your overall score, right? So बहुत ज़्यादा score because of VA या jumbled paragraphs आएगा, ये तो मतलब I don't think you should expect. अगर टाइम बचता है लास्ट में तो गो फॉर इट, या फिर जंबल पैराग्राफ इजी लग रहा है, देन ओनली यू गो फॉर जंबल पैराग्राफ. बाकी हर टाइम पे जंबल पैराग्राफ करने की जरूरत नहीं है. As far as reading fast goes, in terms of reading comprehension passages, again you will have certain passages that will be your favorite topics, which you will find which you will find very easy to read and understand. तो वो वाला अगर करोगे तो of course it will give you better return on investment, मतलब time taken will become lower for that particular passage. That is going to help you. But अगर मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, and if you are not able to understand a lot of passages and you are going in slow or you are going slow in general, then sadly that is basically your ceiling. That is what you have to accept. अगर accuracy बार बार if it is getting affected and you're not able to do it, it's fine. You do 2 or 3 passages, it's perfectly okay. Take 30 minutes, do 3 passages, focus on the non jumbled paragraph wala part, and you should be fine. I am saying this not to create a defensive mindset in your head, but to tell you that CAT के अंदर जो passages होंगे ना, those will be much easier. You will be much more serious and much more agile when it comes to the CAT. तो वहाँ पे definitely your attempts will go up a bit. So don't worry about it at this point in time. Mocks में बहुत बार ऐसा देखा जाता है that the passages are unnecessarily difficult to read, unnecessarily difficult to answer. But of course, you have to prepare for all eventualities. That's why those make sense. But I would not really get very bothered about my reading speed when it comes to the mocks वाले RCs. ठीक है. Harsh is saying 95 percentile in CL mocks. What is it equivalent to real CAT? Harsh, I think around 97, 98 percentile should definitely be achievable with 95 in CL mocks. Learning Copilot continuously getting 25 to 30 marks in VRC, sometimes sharp drop to 7 as well. Hope to go beyond it. How to go beyond it? Okay. वही मतलब the idea is that if your attempts are lower, 25 to 30 मिल रहा है, and your attempts are stuck in that 8 to 10 वाला range कि I'm attempting everything, 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ, सारे राइट हो रहे हैं, then you will need to increase your reading speed. You will need to be much more confident in your ability, because if you are getting 10 correct, 0 wrong, you have the ability to understand stuff even if you go a bit faster. It's okay. तो maybe you can add 3 more attempts to your repertoire, and 3 attempts में से 2 right 1 wrong तो you are benefiting net. So that is basically how you think about it. But if attempts are fine but accuracy is a problem, then I think that is a bigger issue. तो वहां पे you will have to again sit and dissect कि कहाँ पे problem हो रहा है. Am I not reading the passage properly, या फिर मैं वो cues नहीं understand कर पा रहा. मतलब let's say for example you are very attracted to someone, and that someone keeps on dropping hints कि भाई देख लो, I am also interested, and so on and so forth, but you are not able to read those hints at all. So बाकी पूरा दुनिया समझ पा रहा है, but you are not able to understand, and maybe you need to recalibrate your radar a bit. तो वो होता है. तो that is exactly how your VRC का stuff also goes. तो accuracy improve करनी है, you will have to understand the hints that have been given to you throughout the passage. You have to be a bit more critical in your reading. So when you are reading, don't just read passively, read actively. Try to predict कि क्या हो रहा है, author का tone क्या था, कैसे चल रहा था, क्या हो रहा था. You can take that excerpt, put it in ChatGPT, and you can just talk to ChatGPT and say, "Acha, this was my thought process. I thought the tone of this particular thing was pedantic. It was trying to teach me something. What do you think?" And then ChatGPT will say कि नहीं यार, मतलब teaching वाला part तो यहाँ पे आ नहीं रहा. I would say that it was meant for a mass audience, just to tell them that something like this exists, not to teach them per se. So बहुत ही subtle difference होता है telling you something and teaching you. तो
वो सटल डिफरेंसेस जिस दिन पता चलेंगे, योर स्कोर विल ऑटोमेटिकली, आई थिंक. ठीक है. शिवांश, हाउ टू टेक क्वांट्स फ्रॉम 30 टू 40s. शिवांश, वी हैव डन अ स्पॉटलाइट ऑन दिस. तो वहां पे आई हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू स्ट्रेटेजीज टू इंप्रूव योर कैट स्कोर्स. तो 60 टू 99 परसेंटाइल बेसिकली वाज द नेम ऑफ दैट स्पॉटलाइट. सो यू कैन हैव अ लुक एट इट. वहां पे मैंने काफी टेक्निक्स डिस्कस किए हैं. हाउ टू improve attempts, which is I think the biggest challenge because people get stuck वहां पे. So how to not get stuck, how to improve attempts, what all question types are the important ones. So there are some 95 topics overall I think that are the most important. तो वो topics तो cover होने चाहिए. So if it's a content issue, then maybe you will need to work on some topics which have been appearing frequently, but you have not been able to answer. Be it a type A, type B question or an easy, moderate question. तो वो अगर नहीं हो रहा है, you will have to work on some content. But अगर वो हो रहे हैं, but you are taking a lot of time, then maybe you need to develop better problem solving skills. So depends on why you are stuck in that 30 to 40 वाला thing. But definitely it is possible to get out of it. थोड़ा सा you will have to work on your content, confidence, बहुत सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर. But you can have a look at that spotlight. I think that is going to help. ACS, General Non-Engineer, Male, 697, fourth year in college, not yet confident in my CAT prep, and only comfortable with VRC, but my quants and LR are lacking. Should I prioritize internships or CAT? And what would be a safe score? Thank you for a valuable dedication to this series. ठीक है. हाँ, so ACS 697 पे honestly if I'm looking at, मतलब मेरे पास कुछ भी अगर डेटा नहीं है and I'm simply looking at your percentile की what you can get. So I think it might be possible for you to get to a 95-ish kind of a percentile. That is where I think you will mostly land up if you take the test today with utmost confidence and everything. ठीक है, तो आज अगर टेस्ट दोगे तो. Having said that, I know people जिनका 697 kind of profile था, उससे भी खराब प्रोफाइल था, they ended up getting a 99.5, 99.8. I know someone with a 666 profile जिसको 99.97 मिला था कैट में. That is the highest number I know of. तो ये सब चीजें होती हैं. People get good scores in spite of not having great acats. So that is possible. What will be a safe score? Safe score for what? So at your score, if I'm looking at my best option, which might be FMS, I'm looking at a score of around 99.2-ish at least with balanced sectionals. तो वो मेरा main मतलब play होगा. If I'm looking at MDI, IFT, which seem to be slightly ambitious options for you because उनका cut off around 95, 96, 97 तक जा सकता है. So that is where I think you should be aiming. And when it comes to safe options, around 91, 92, 93 is fine. But I think you should start with the mindset of looking at a 95 percentile is my suggestion to you. फिर उसके बाद मतलब you can see what happens. And in terms of whether you should be prioritizing internship over CAT prep, see अगर internship है और वो full time job में convert होगा या नहीं होगा पता नहीं है, कुछ chances नहीं है, then you can lie low, कोई problem नहीं है. Internship अगर कर रहे हो तो आराम से कर लो, कोई issue नहीं है. If it's a very good brand name and there are chances of you converting it into a full-time job, I think you can prioritize your internship more than your CAT prep because given your CATs and your confidence, जो मेरे को tone समझ में आ रहा है looking at your comment, it's a very broad, मैं ऐसे broad brush stroke में मार रहा हूँ. But अगर मैं ऐसे ही assume कर रहा हूँ तो then I'm pretty sure that that internship thing might be a better option for you. But it should translate into something. अगर वो translate नहीं हो रहा into anything, then I would not worry about internship much. I would still focus on my CAT prep and do something with my life. And if you're talking about prioritizing your placement का this thing, placement का process over CAT, then I would again suggest the same thing that I had suggested Anu कि placement पे ज्यादा ध्यान दो. Get your placements done. 10-15 days of effort is what is needed, I think. उतना करके तुम्हारा प्लेसमेंट निकल जाएगा. देन वट एवर 70 और डेज आर लेफ्ट वो कैट के प्रिपरेशन के लिए यू कैन डेडिकेट. मतलब नॉट सेइंग कि नेक्स्ट 15 डेज में प्लेसमेंट की तैयारी करो, ऐसा नहीं है. व्हेनेवर योर प्लेसमेंट इज गोइंग टू हैपन अराउंड दैट टाइम यू प्रिपेयर फॉर प्लेसमेंट्स, बट बाकी जो भी टाइम बचेगा उसमें यू कैन प्रिपेयर फॉर. ठीक है. संयुक्ता, व्हाट्स अ गुड mock score as of now for someone aiming 95 plus percentile in CAT. 95 plus percentile अगर aim करो, I would like you to be as close to the 90th percentile as you can. You should comfortably be hitting 90 every mock. मतलब 85 to 90 के बीच में average score आ रहा है and on good occasions you have hit a 90, 92 kind of a thing. If you are doing that, then I think you are on track to get that 95 percentile or even slightly beyond that. So I would want my mock scores to be around 90 balanced scores. Okay. Okay. I'll answer Anu and Nirmala first and then Mohit का puzzle देख लेते हैं. Let's see. Sir, what is the difference in difficulty level between AIMCAT and real CAT? See, मतलब AIMCAT का difficulty level ऐसे there is no one difficulty level for the AIMCAT. Even if you go from one AIMCAT to the next, the level of difficulty will fluctuate.
So the idea behind taking MCATs or they making MCATs is to make you experience a lot of different types of questions that are there. Honestly speaking, if I were to just take a shot at, मतलब ऐसा कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि यही है और ऐसे ही होगा, ऐसा नहीं है. MCATs will give you good exposure to CAT level sets and everything. But if you ask me, I think their verbal is very similar to what CAT का verbal might look like. उनके passages थोड़े लंबे होते हैं compared to what CAT के passages are in general, what I have observed. So that is basically what their VARC looks like. Level of difficulty के हिसाब से it's a good mix. You can see something very similar to CAT as well. But in general, what I have seen is that their passages, their paragraphs, their options are slightly longer compared to a lot of other providers. In terms of DILR, I think time का strength mostly lies in DI based sets. So जो pie chart वाले sets होंगे या फिर table वाले sets होंगे, graph वाले sets होंगे, although I don't like it to be DI and LR, वो विभाजन मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता. But I think that time has a much better variety of DI sets than they have LR sets. Not saying LR sets are bad, but उनके DI sets में बहुत अच्छा variety मिलता है, is what I have generally observed. But otherwise, level of difficulty wise, it's pretty fine. जो उनके difficult sets होंगे, this will be outrageously difficult, तो उनको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है. And in terms of quant, I have always found quant time का quant to be a lot more technical compared to other providers. मतलब technical का मतलब it's either you know it or you don't. Those kind of questions. It's very difficult for you to work your way around things अगर core concept ही नहीं पता तो. Which is decent practice. But I have always felt that CAT के जो quant questions है ना वो application based काफी ज्यादा होते हैं. So वहां पे even if you don't know something, you will be able to find your way out of it. Just that it will take more time. So time will prepare you, MCATs will prepare you with the concepts that are required to solve questions. But CAT के अंदर you will find questions that are much more doable, seem doable. चलो, I'll not say they are doable, they seem a bit more doable compared to MCATs. But then वो भी एक trap है, you will spend a lot of time doing those questions because you don't know how things might work. ठीक है, तो ये चीज होगा यहाँ पे. Okay. Nirmala 899 NCOBC non-engineer. How many marks I'm assuming should I aim to get? Black I M. NCOBC non-engineer female, matlab everything is going on in your favor. I would be comfortable at around 95ish percentile as well. 94, 95 maybe, matlab I will be comfortable. But given this year's trend, you have to score as many as you can. But मेरे हिसाब से 94, 95 should be very good. So that is my take on this. ठीक है. शिमा 9970 इग्नू यूजी में से ये है. सेफ परसेंट ऑफ ब्लैक आई एंड एफएमएस 997. ब्लैक आई थोड़ा बॉर्डर लाइन लग रहा है ऑनेस्टली. एंड इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, आई डोंट थिंक आई मेंशन एनीथिंग. ओके, ठीक है. बट द आइडिया इज if you are a non-engineer, then non-engineer general candidate, then I think around 99.3ish, 2ish should be decent enough. But if you belong to some category, then थोड़ा और कम हो जाएगा. And that is basically where you should be. But if you are asking me एकदम blanket level पे, I will say 99.2 तो at least aim करो. For all of them, सिर्फ FMS देख रहा हूँ तो 99.2 is generally decent enough. IK के लिए भी decent होना चाहिए from what I understand. A, B, C, L might be थोड़ा सा tight because of that 17 graduation, but you never. So try to maximize your score. But bare minimum, I wanted to cross that 99 at least. That is the idea. ठीक है. यश, आई didn't understand. Non-engineer general, वही 99.2 then. Yeah, 99.2, 99.3. That is what will make me slightly comfortable. FMS will be possible. IK should also be possible, but BLAC will be थोड़ा tight. तो जितना you can push, you push. That is the CAT RC versus CL mock RC. They are pretty similar. I have felt CL gives nice balanced mocks. तो मतलब I always like CL के mocks in general. Overall अगर देखेंगे तो कहीं कहीं पे मतलब कुछ कमियां हो सकती है. But overall, if you ask me, all sections flat. I would say CL mocks are well designed. I would say. So CL mocks RC versus CAT mock RC I think are very similar. I would not say they are very different per se. CL mocks are good to go. Shima, yes, CL mocks are fine. कोई issue नहीं. Yash, in the last 10-15 minutes, if a moderate RC comes and you cannot understand what's the idea of each para, then how to tackle such situations. Yash, see, the idea is for you to understand if there are any fact-based questions. In that RC, अगर fact-based questions है, they're talking about a particular phenomenon or a particular part of the RC, then you can still salvage it.
But if the questions are also inferential, it's a good idea for you to let go of that passage. So have your mental cutoffs in mind कि इसके बाद तो मैं passage नहीं पढ़ूंगा. So let's say, for example, you really like botany, and there is some passage that starts with botany as its core principle, but फिर नीचे आके वो कुछ philosophy में चला जाता है. Plants का being alive, not alive, they having sensation, non sensation उसमें चला जाता है, and then they start talking about free will and what not वहां चला जाता है. तो then you know by the middle of the passage कि भाई ये कुछ अलग direction में जा रहा है. This is not the person that I fell in love with. That is what it will tell you in a way. Sorry for the analogies today, but relationship analogies today. But हाँ, मतलब वो समझ में आता है जैसे आता है. It's better for you to get out of the relationship instead of just staying put and torturing yourself and the RC and the other RCs. तो वो सब करने की जरूरत नहीं है. The moment you realize something is off, get out of it. Don't spend a lot of time on that. Do something else instead. And अगर 15 मिनट बचे और एक ही से बचा है, then you are in like really good shape. So make sure that you are taking some time back, 30 seconds, breathe in, breathe out करो, and then start reading it again. So that might help you. But bad RCs don't get stuck with bad RCs. I want IMT GIM as backup. What should be my safe percentile for conversion with an okayish interview? यार उत्कर्ष सी इंटरव्यू पैनलिस्ट जो होते हैं ना वो उनका मतलब काफी वेटो होता है. So if they like you, they will take you even at a borderline 90-91 percentile. And if they don't like you, 99 percentile में भी तुमको reject कर सकते हैं. So I have always believed in one thing, that if the college is willing to call you for an interview, willing to invest their time into calling you for an interview, I think you should value that gesture. एंड यू शुड गो प्रिपेयर टू द इंटरव्यू. तो कभी भी एवरेज परफॉर्मेंस को सोच के मत जाना. एवरेज परफॉर्मेंस विल ऑलमोस्ट इनवेरिएबली लीड टू अ नॉन कन्वर्ट और अ हाई वेट लिस्ट इन स्पाइट ऑफ अ हाई स्कोर. सो स्कोर्स एंड कन्वर्ट का बहुत रिलेशन नहीं होता जनरली. बट टू गिव यू एन आंसर, if you are at around 90 to 93%, I think you have a decent chance of converting. ठीक है. ACS, thank you for advice. I'm targeting a score of 95 only and have MDA as my target as well. Pursuing WorkX. DU doesn't have placements. 4 year use is a backup. ठीक है, fine. That's good. ACS. मतलब that is what practically even I would want to do. So your thought process seems fine. Anu is saying 95, 85, 78 GEM target percentile for ABC. General engineer male 99.7 plus 99.8ish, that is the safe percentile. But funny things happen. So 99.6, 99.7 पे भी आ सकता है call, but anything above 99.5 and you should have a shot. But to be on the absolutely safer side, 99.75 plus 99.8 अगर देखेगा, you should be happy. And only for ABC, by the way. 997 FMS, I am Lucknow, I am Kozhikode, non-engineer male. तीनों के लिए आई वुड से लो 99 एटलीस्ट. मतलब ट्राई टू टारगेट 99 टू 99.5 के बीच में कुछ नंबर टारगेट करने की कोशिश करो. आई थिंक दैट शुड बी डिसेंट. ठीक है. कहाँ गया? वेयर इज द थिंग? एक पजल है. एक टीचर थे एंड उनके 9 चेले थे एंड उनके पास बस 2 रोटी थी. देन हाउ टीचर विल डिस्ट्रीब्यूट इट? आई डोंट नो. I can think of some answers, but seems to be some trick question. I don't know. They will cut it into equal pieces using whatever scale and stuff like that. या फिर I'll tell you a very interesting story by the way. चलो बात छिड़ी तुम्हें बता देता हूँ. I don't know how many of you have heard about this story from the Mahabharata, but I'll tell you on a completely unrelated note. ठीक है. So the idea is, I'm sure all of you have heard of this character called Shakuni, right? So there was this person called Shakuni, who was the maternal uncle of all the uh, Kauravs who was there. Shakuni मामा जो कैरेक्टर और द पर्सन दैट वाज देयर, तो उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. तो वहां पे क्या होता है, हिज फादर बेसिकली मैरिड अवे गांधारी टू धृतराष्ट्र, हिज एल्डर डॉटर. आई थिंक ही मैरिड हर अवे, बट बताया नहीं कि उसके कुंडली में कुछ दोस्त ऐसा कुछ स्टोरी आता है. ठीक है. तो होता ये वहां पे कि बिकॉज ऑफ दैट धृतराष्ट्र गेट्स वेरी एंग्री, क्या तुमने मेरे जानकर कैसे खेल दिया ये सब करके. एंड व्हाट हैपेंस इज दिस गाय पुट्स द फादर, मतलब गांधारीज फादर, आई थिंक गांधार, उनको उनके 100 बच्चों को, तो गांधारी ऑल्सो हैज 100 सिबलिंग्स बाय द वे, तो उन सबको जेल में डाल देते हैं. सो नाउ गांधारी फील्स वेरी बैड कि अरे मेरे पूरे फैमिली को जेल में डाल दिया, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे मत करो, शो सम मर्सी, डू समथिंग, यू कांट लेट देम डाई, ये सब चीजें. So Dhritarashtra says, okay, fine. What I will do is, I will give 1 grain of rice to all the people that are there. तो 101 लोग हैं, 101 grain of rice हम देंगे. Now every day what happens is,
everyone eats one grain, and of course it's not enough to meet their physiological needs. तो वो धीरे 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 वीक होना शुरू हो जाते हैं. देन वन फाइनली दे रियलाइज कि एक काम करते हैं, हम लोग सब ग्रेन्स को इकट्ठा करते हैं एंड वी विल बेसिकली फीड इट टू वन इंडिविजुअल. दैट इंडिविजुअल इज शकुनी. सो वो लोग बोलते हैं कि हम सब अपनी ग्रेन्स को इकट्ठा करेंगे, शकुनी को देंगे, ही विल ईट, ही विल सर्वाइव, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ही विल टेक रिवेंज फ्रॉम आवर साइड. ठीक है. एंड उसके बाद और थोड़ा गोरी हो जाता है डिटेल्स कि हाउ डज शकुनी गेट डाइज एंड ऑल. तो बैकबोन के बोन्स में से बनता है एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन, हिज लेग गेट्स ब्रोकन सो एज टू रिमेंबर कि ये तुम्हारे लाइफ का गोल है. ऑल दोस थिंग्स हैपन एंड फाइनली शकुनी एंड्स अप टेकिंग रिवेंज in some twisted weird way. So that is basically the story how it goes. So नौ दो चपाती को 9 लोगों में या 10 लोगों में कैसे डिवाइड करेंगे? सो दैट इज माय आंसर. तो आई विल आंसर योर. नहीं नहीं सुकून, 100 बच्चे थे बट 100 भाई भी थे. इट वाज जेनेटिक, समथिंग लाइक दैट. सो इट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट इज देयर. ओके, सो मोहित आंसर, चेले का नाम ही 9 चेले था, तो दैट इज अनदर स्टोरी. बट this is a story. I thought it might be interesting for some of. That's why I shared it. ठीक है. अब उसका ट्रूथ वेरासिटी कौन है क्या है वो सब मेरे से मतलब डिस्कस करना. दिस इज समथिंग दैट आई हैड हर्ड, दैट्स व्हाई आई टोल्ड इट टू यू. आई डोंट नो हाउ ट्रू और फॉल्स इट इज. तो जो है वो है. If you liked it, great. If you didn't like it, forget that I ever mentioned something like this. And I'll see you again in the next spotlight tomorrow. तो कल हम लोग कुछ अलग बात करेंगे. And till then keep